higher education is a big part of that, but our higher education is not in itself what we are bothered about. That must be high quality, but through higher education, how do we serve people? It is with that intention that we are setting up this university. So this university has a clear social purpose. That's why we're setting up the university in Ranchi. I must also say that the university is only one part of our commitment to the state of Jharkhand. Our work with, in whatever way we can support the public system in school education, subsequently in public health, on other matters, that also is a commitment that we have to the state of Jharkhand. We already have significant amount of work on the ground through our partners on the matter of how panchayats can improve their functioning, how livelihoods can improve, and that shall continue. In sum and substance, the state of Jharkhand and the people of Jharkhand are, I think, our biggest commitment as we look at the next 10 years, by far the biggest commitment. And that is demonstrated also by the fact that in our imagination, the university in Ranchi will be our biggest university. So the Bangalore University is already running for 10 years. Bhopal University shall start in 6 months' time. Hopefully, Ranchi will do a very quick job of starting it. And then we're looking at a place in Northeast. But in our imagination, clearly Ranchi will be the biggest university. I must also say, this would be completely incomplete if I don't mention this, that working with the state of Jharkhand has been an extraordinary experience for us. And it is not only during the process over the past 6 odd months that we've had this experience. During those very difficult days of COVID, I remember that when we were working here and whatever little contribution we could do, but all of it was shoulder to shoulder with the government system. And all of it was possible only because of the extraordinary collaboration that was possible right on the ground up to the Honorable Chief Minister. So that has been really the starting point of our, I would say, relationship with Jharkhand. And the entire process that we have gone through. I mean, there's so many people, starting with the Honorable Chief Minister, Shri Sukhdev Singh, Ekka ji, Chaubey ji, Rahul ji and I have met today, but, I've heard, Suraj, there are others who are, I think Khandelwal Sahab, Khandelwal Sahab is retired, he's retired, but Khandelwal Sahab has played a very, very pivotal role in our coming here, right? So we are very grateful, but I must also say that this is just the beginning. I mean, yes. We should sit here together 10 years later and say कि इस university ने सही में कुछ अच्छा किया. So then that is fulfillment. So with that, and again, thanking all of you and, eagerly looking forward to getting everything started. Like I said, not just the university, all our work with the government schooling system, hopefully quickly with health on the ground and many other things. So. हमारी मुलाकात नहीं हुई है. बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद. और ये इनका विधानसभा पड़ेगा. अच्छा, आपको विधानसभा. That is so nice. That is so nice. Okay. So thank you very much. And बहुत बहुत धन्यवाद. और आपसे तो मुझे लग रहा है धन्यवाद में बहुत हम लोग पीछे हैं. ये हम लोग को और तेजी से आगे बढ़ना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है.
HP, we have signed the MOU and we have exchanged the MOUs. You saw that? Yes. Yes. Thank you. Thank you. One part is it. Form, any sort of form. So we have a Are you able to hear us? Yes, I can hear you. Would you like to say something in the beginning? And then I think Rahulji has suggested that there's some questions also. But would you like to begin by saying something? You're asking me? Yes, yes. You know, this is a very important occasion for us, and we will always cherish this. The university which we are setting up here in Ranchi will be our biggest university. So that speaks of the importance which we are giving this region. As Anurag mentioned, we are also in this region for other miscellaneous works, including financing many NGOs in various areas of social sectors. So we are deeply committed to Jharkhand, and we will continue to be deeply committed to Jharkhand. And it is our intention, like the Chief Minister says, to expedite as quickly as possible commissioning of this university. So we're looking forward to the land allocations, and we're looking forward to very major support from the government in terms of permissions going forward. Thank you. Thank you. HP Rahulji will ask you a few questions. Yes. Okay. My first question is, we have witnessed your journey of transformation from software to education, from corporate world to active philanthropist. What is your take on it, and how do you perceive this journey of transformation? You know, I've been very inspired by my mother. She was a medical doctor who never practiced medicine, but shortly after she got married, she started a hospital for crippled children at Hajeli in Bombay. And it was one of the first hospitals in Asia for crippled and cerebral palsy children. It was an extraordinary hospital. We were not wealthy then, and she had to mobilize all the funds from generous industrialists and government. And I do remember right from the age of 27 up to the age of
80, she was the chairperson of this institute, and she gave her life for it. That was a very important role model for me to be involved in social service. Very, very important role model for me. The second important role model for me was the teachings of Mahatma Gandhi. So this combined with my mother really got me very committed to social service as a very important part of my life. Thank you. My second question is, as a foundation is going ahead with the third university and Ranchi after Bengaluru and Bhopal, the economically weaker section of Jharkhand is very hopeful to see this as an opportunity for attaining higher education at low cost. In fact, young social entrepreneurs of this place too are very hopeful for your support in putting up their startups in the fields of environment, social and governance issues. How do you see this investment in Jharkhand as the opportunity for the people of Jharkhand? Not only the university, but the foundation's overall work is to serve the people of Jharkhand and hopefully the people of the eastern part of India with a very important base in Jharkhand. Our university programs are designed to prepare young people who should serve the state and its people in education, in health, in environment, in forestry, and in agriculture, and other matters that are important to the state. On the specific matter of social entrepreneurs, Anurag can comment. Anurag, would you like to comment on that? Yeah, sure. So, you're able to hear me, H? I don't think. Thank you. Are you able to hear me, HP? Yeah. Okay, Yes. good. Yeah. So I think that's a very important point, which is that, we have this university and you have this very lot of young people, let's call them social entrepreneurs that you're talking about. We have some few specific things. We actually have set up a very large network of young social entrepreneurs as the Bangalore University as the hub. So what it does is it starts from the very beginning. When they're a student, how do you capture good ideas? How do you mentor them? Once you mentor them, where can they get funding? If they get funding, how can they get next level of funding to scale up? Right. So we have that entire systematic process. We've been running this for the past 5 or 6 years at the university. So I think that is something, when we have the university in Ranchi, they should really form the hub for that. Absolutely should form the hub for that. But from our perspective, I think equally important thing is that the grant making side that I talked about, that we support a lot of NGOs through our grant making, many NGOs in Jharkhand also. That is a particular kind of a program where we give young people in the very beginning, let's call it a fellowship. So they will get a 3-year fellowship in which they can explore social things. So once they get the 3-year fellowship, after that, they can actually form a small organization and then we'll fund that. And then when they go up further, then we can scale that up. So we have a very systematic thing to do this. But I feel that, and this is a discussion that I've had with many of you, I feel that we need to design it particularly for Jharkhand. So, what should not happen, in my view, what should not happen is that we run this university here, we run these programs, but lots and lots of the youth of Jharkhand go out. We need to figure out a way by which the youth of Jharkhand does good work in these areas in the state of Jharkhand. Otherwise, that's migration out, nobody can stop it, but it's a problematic challenge. So we'd rather we do something here by which they contribute in the state of Jharkhand. Thank you. आज के इस ऐतिहासिक I lost you. Hello. Hello. आज के इस ऐतिहासिक क्षण में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि अपने शब्दों से हमें अनुभूत करें. Mr. Soren is going to speak. And Hello.
Am I audible? You're audible, yes, but somebody preceding you was not. आज इस ऐतिहासिक दिन के लिए अजीम प्रेम जी हमारे साथ उपस्थित हैं। आपको मैं अपने पूरी टीम के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि झारखंड के प्रति जो आपने हाथ बढ़ाया है और एक नई शुरुआत हम लोग आपके साथ मिलकर करना चाह रहे हैं। इस पूरे प्रक्रिया में आप एक गवाह के रूप में, एक गार्जियन के रूप में हम लोग के साथ हैं और ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। आप इतने वेल एक्सपीरियंस्ड एक उद्यमी के साथ हम लोग झारखंड जैसे पिछड़े राज्य में जहां बहुत सारी चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों से हम लोग कैसे बाहर आएंगे, इसमें कहीं ना कहीं आपका ये रिसर्च सेंटर, ये विश्वविद्यालय जिसकी एमयू आज यहाँ हम लोगों ने करी है, ये एक हम लोगों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। जैसे कि आप एक उद्यमी भी हैं और साथ साथ में एक सेवा भाव का जो आपके अंदर में इंसान है, वो कहीं ना कहीं हमारे इस राज्य के लिए बहुत ही आने वाले समय में इसका हमें परिणाम बहुत बेहतर हम उम्मीद करते हैं। शायद आपको या आप कई भी किसी भी राज्य में आप अपनी संस्थाएं खोलने की आमदा रखते हैं, आप खोल सकते हैं। और बट हम लोगों ने विगत अनुराग जी के साथ बहुत बार कन्वर्सेशन किया, कई चीजों पर डिस्कशन किए। इस राज्य के लगभग हर छोटी बड़ी चीजें पर हम लोगों ने बात की। कुछ जो हमें नहीं भी करना है उस पर भी हम लोगों ने बातें की। और मुझे लगता है कि जो विगत कई महीनों से जो हम लोग प्रयास में थे कि आपके अनुभव को हम इस राज्य में उपयोग करें, आपके अनुभव का हम लाभ लें। और इसमें हमारा प्रयास रहा है। हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री जी भी हैं और जिस क्षेत्र में ये विश्वविद्यालय खुलना है उसकी विधायक भी हमारी जो न्यू यंग लेजिस्लेटिव हमारी अभी जस्ट सेलेक्ट हुई हैं, नेहा त्रिकी जी, वो भी हैं। हमारे चीफ सेक्रेटरी यहाँ उपस्थित हैं, हमारे सभी सीनियर ऑफिसर्स यहाँ अवेलेबल हैं और सभी लोगों का आपके इस विश्वविद्यालय के प्रति एक बहुत सकारात्मक सोच हम लोगों ने सोचकर इसको आगे बढ़ाया और काफी उम्मीद के साथ कि अजीम प्रेम जी का अगर हम लोग सहयोग ले पाते हैं। यहाँ बहुत सारे इंडस्ट्री हैं, टाटा जैसे स्टील इंडस्ट्री है, बिरला जैसी संस्था यहाँ पर है, बोकारो स्टील सिटी जैसे बड़े इंडस्ट्रीज हैं यहाँ पर, कोल इंडिया जैसे बड़े इंडस्ट्रीज हैं। बट ये सारे इंडस्ट्रीज हैं एक सिंपल अपने
बिजनेस पर्पस को लेकर ही ये लोग अब तक जो चीजें हमें यहाँ पर अनुभव करने को मौका मिला है, और जो मुझे लगता है कि इस राज्य के लिए जो सेवा भाव भी एक कंपोनेंट इस राज्य के लिए होना चाहिए था, जहां पर यहाँ के पुअर पर्सन, ट्राइबल डोमिनेटेड स्टेट है, एसटी एंड एससी की बहुत बड़ी संख्या है और माइनॉरिटीज की बहुत बड़ी यहाँ पर तादाद है, और ये ऐसी कौम है जहां पर मैं समझता हूं कि बड़े इंडस्ट्रियलाइजेशन से भी बहुत ज्यादा बेनिफिट हो पाता है। ये यहाँ पर बहुत प्रैक्टिकल देखने को नहीं मिल पा रहा है। मुझे लगता है कि एक जो बेस यहाँ के लोगों की आवश्यकता है, एक जो एजुकेशन हो, बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो है वो अगर उनकी पूरी होती है तो उनकी आने वाली पीढ़ी बेहतर काम करने का रास्ता बना सकती है। और इसके लिए कहीं ना कहीं कुछ चीजें जो हमें अनुसंधान या रिसर्च करने की आवश्यकता है कि यहाँ के लोगों को किस तरीके से हम लोग आगे ला सकते हैं और डेवलपमेंट सेक्टर से जोड़ सकते हैं। थोड़ी बहुत पोटेंशियल अगर हम कहें तो ऐसा खराब भी नहीं है, बस थोड़ा वे ऑफ डायरेक्शन जो यहाँ है, वहाँ इस राज्य में लोगों को डायरेक्शन देने के लिए जो एक प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म की कमी हमें देखने को मिलता है। और मुझे लगता है कि आपके इस फाउंडेशन से ये वे ऑफ डायरेक्शन जो इस स्टेट का होगा इन फ्यूचर में नेक्स्ट जनरेशन के लिए, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे अदर किसी सेक्टर्स में हो, और मेहनत करने पर यहाँ के लोगों में कोई कमी नहीं है। क्रिएटिविटी बहुत जबरदस्त है, स्पोर्ट्स बहुत जबरदस्त यहाँ बच्चे खेलते हैं, और एजुकेशन के मामले में भी अगर प्रॉपर वे में अगर हम उनको गाइड करें तो उसमें भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रिजल्ट ये स्टेट के बच्चे करते हैं। लेकिन ओवरऑल कहीं ना कहीं कुछ अच्छे अनुभव संस्थाओं की, अच्छे अनुभव गाइडेंस की आवश्यकता राज्य को हमें लगता रहा है, और इसी प्रयास से हमने सभी लोगों ने मिलजुल कर ये प्रयास किया कि आपका सहयोग लिया जाए। आपके अनुभव जो पूरे देश को मिला है, और नई पीढ़ी को भी आपने एक बहुत बड़ी समूह को आपने साथ जोड़ रखा है, और ये प्रभाव कहीं ना कहीं हमारे स्टेट में डेफिनेटली पड़ेगा। और इसके लिए हमने ये प्रयास किया है कि ये तो मुझे लगता है कि जो आज एमयू हुआ है इसमें भी हम बहुत डिले हैं, और मैं इसे और भी फास्ट करना चाहता था, और मैं चाहूंगा कि आगे जो भी चीजें हम लोग करें वो बहुत तेजी से करें, और जल्द से जल्द हम लोग जिस उद्देश्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं उसको हम लोगों तक पहुंचाएं। यहाँ के आने वाली पीढ़ी को हम लोग, आने वाले जो जनरेशन है उसको हम लोग इसका बेनिफिट दे पाए, चाहे वो हेल्थ सेक्टर में हो, चाहे एजुकेशन में हो, या अदर सेक्टर्स में हो। और मुझे लगता है कि एक बार अगर हम लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं, और आपके पास जो अनुभव है, और आपके पास जो आपके जो आइडियाज हैं, डेफिनेटली इन फ्यूचर के लिए ये स्टेट में बहुत जबरदस्त तरीके से आपके उस अनुभव और पोटेंशियल को हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं, और इसका हम लोग लाभ भी, इसका बेनिफिट्स भी लोगों को दे सकते हैं, लोगों को मिल सकता है। क्योंकि बस अगर यहाँ कुछ कमी है तो थोड़ा सा डायरेक्शन, थोड़ा सा मार्गदर्शक, जो एक गार्जियनशिप का एक ये है कमी है, उसको हम पूरा करने का समझते हैं कि इस रास्ते से हम लोग जरूर कर पाएंगे। और बस बातें बहुत
है, लेकिन हम चाहेंगे कि हम लोग अब थोड़ा काम में हम लोग ज्यादा तेजी गति में रहें, ताकि जो उद्देश्य के साथ आप जुड़ रहे हैं, हम जुड़ रहे हैं, पूरी टीम जुड़ रही है, उसमें कहीं भी कोई कमी ना रहे, कोई पीछे ना रहे। धन्यवाद अजीम प्रेम जी, नमस्कार। धन्यवाद। Throughout, and sir, without your initiative and without your help, this wouldn't have been possible. And I would like to thank Ajim Premji sir also, because of whose initiative this historic day has been possible. Sir, Sorry again, I disturb you, sir. When you coming to Ranchi, sir? I will I am come waiting here. I will come before the end of this year. Right, sir. Most welcome. Next 3 months. We'll start maybe earliest to earliest. Right, sir. Thank you, sir. sir, Thank on this you. occasion, on behalf of our department, sir, our secretary sir wants to present sir a token of our love and appreciation, sir. For sir, Sir, it's Anurag, are you going to be carrying? I would request, sir. camera इधर करो. Sir, this is for you. The Honorable CM sir is handing over. And I'm supposed to carry this back to you, to Bangalore. Okay. This is our local product. Good, sir. This is Organic. organic foods Thank you. in this packet. Thank you. I would also request Secretary sir to present this to our Honorable Health Minister, sir. Thank you, sir, for making this event successful. Thank you so much. Thank you. Thank you, sir. Okay. You could log on. Yeah, you could log off HP if you wish. Okay.